Assalamu alaikum my dear friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss the chemical classification of matter. In the previous lectures we discussed about the physical classification of matter, where we discussed about solids, liquids, gases. We also discussed about the plasma state. And we also discussed about Bose-Einstein condensate. If you have not watched my previous lectures, do visit my YouTube channel and watch my previous lectures so that you can easily understand today's topic. We also discussed about the definition of matter. Where we learned that anything that occupies space and possesses mass and the presence of which can be felt by any of our five senses, we call it matter. This matter is made up of small particles which we called atoms. So this matter is made up of small particles called atoms, and these atoms are further made up of three particles which we call electrons, protons and neutrons. Let us come to our today's topic, that is the chemical classification of matter. This was the physical classification which we discussed in the previous lectures. Physical classification is based on the physical appearance, and this chemical classification is based on chemical, structural and functional properties of matter. According to the chemical classification, matter can exist as a pure substances and a mixture. Matter can exist as a pure substance and mixtures. What is this pure substance? Anything which is made up of only one type of atoms, or one molecule, we call it as a pure substance. Pure substances are made up of one type of atoms, or one molecule. यानी कि हर चीज जो एक तरह के एटम से बनी हुई है या जिसमें एक तरह का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस. फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करेंगे कॉपर वायर्स की, या हमारे पास जो भी एलिमेंट है, ऑल एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस. अगर हम बात करेंगे कॉपर वायर्स की, अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन गैस की, या अगर हम बात करेंगे किसी भी शुगर हो, सॉल्ट हो, ये चीज़ें किन से बनी हुई है? ये एक टाइप के एटम से बनी हुई है. सपोज हमारे पास जो कॉपर वायर्स है, कॉपर वायर्स में कौन सी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं? ओनली कॉपर एटम्स प्रेजेंट होते हैं. इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको? हम इसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस. सो प्योर सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स which are identical to each other. If we talk about the mixtures are those substances which are made up of two or more pure substances. Those substances which are made up of two or more pure substances.
यानी कि हर वो चीज़ जिसमें एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो, हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं? हम उस चीज़ को मिक्सचर बोलते हैं। सपोज हमारे पास मिल्क है, मिल्क अगर साइंटिफिकली देखा जाए, मिल्क इज नॉट प्योर, बिकॉज इन मिल्क वी हैव प्रोटीन्स, we have fats, we have calcium, we have vitamins. मिल्क में फैट भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, कैल्शियम भी है। सो मिल्क का केमिकल नेचर एक जैसा नहीं है, सो वी कॉल इट ए मिक्सचर। फर्दर जो मिक्सचर्स है उनमें दो किस्में हैं, एक तो है होमोजीनियस मिक्सचर और एक है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। वो चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, यानी कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे मिक्सचर्स एंड इट इज टाइप्स। टुडे वी विल फर्दर डिस्कस ऑन प्योर सब्सटेंसेस। हमारे पास दो टाइप्स के प्योर सब्सटेंसेस हैं। वी हैव फर्दर टू टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। एक हमारे पास है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। In the universe, there are 118 elements present in this universe. 118 elements are present in this universe. Different combinations of elements produce different substances. Suppose अगर हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, अगर कार्बन कंबाइन करेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है, CO भी बना सकता है। या अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन होंगे, ये क्या बनाएंगे? ये बना सकते हैं हाइड्रोजन H2O वाटर मॉलिक्यूल, या H2 मॉलिक्यूल, या यहाँ पे अगर कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो जाएगी, ये बना सकते हैं CH4 दैट इज मीथेन। सो डिफरेंट एटम्स कंबाइन डिफरेंटली टू प्रोड्यूस डिफरेंट सब्सटेंसेस। अगर हम कम्बिनेशन की बात करेंगे, हमारे पास मेनली दो टाइप के कॉम्बिनेशंस हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस। वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस। एक है होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन, homoatomic combination, and the second one is heteroatomic combination. Heteroatomic combination. In homoatomic combination, there is a combination of same types of atoms. The name itself indicates homo means same, atomic means atoms. That means same type of atoms combine. Whereas in heteroatomic combinations, different atoms combine to produce molecules. So in homoatomic combination, if we see when an atom or a group of atoms exist freely, it forms a molecule. Let me repeat this. When an atom or a group of atoms exists freely, it forms a molecule. अब जो ये मॉलिक्यूल है, इन होमोएटॉमिक कॉम्बिनेशंस, a molecule can be either monoatomic molecule or diatomic molecule. दो तरह के मॉलिक्यूल बन सकते हैं किसमें? होमोएटॉमिक कॉम्बिनेशन में। एक तो बन सकता है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनोएटॉमिक या और एक है डाइएटॉमिक।
diatomic. In monoatomic molecule is made up of only one atom. Suppose हमारे पास अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे नोबल गैसेस, लाइक वी हैव नियॉन, we have argon, we have xenon. These are monoatomic molecules because they are made up of only one atom. When many monoatomic molecules, what are these? These are monoatomic molecules. These are monoatomic molecules. When many monoatomic molecules combine, they form a element. Suppose when many monoatomic molecules of neon combine, अगर नियॉन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे वो क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म ए नियॉन एलिमेंट. इसी तरह अगर ऑर्गन के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे दे विल फॉर्म ऑर्गन एलिमेंट. अगर ऑर्गन के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे दे विल फॉर्म ऑर्गन एलिमेंट. Now, what is this diatomic? Di means two. These molecules are made up of two atoms. Like we have H2, we have N2, we have O2. These are diatomic molecules because they are made up of two atoms. When many diatomic molecules combine, or when many diatomic molecules combine, they also form an element. When many H2 molecules combine, they form hydrogen element. This is hydrogen element. This was all about the homoatomic combination. In homoatomic combination, what we see? We see the combination of same type of atoms. Now let us move to the heteroatomic combination. What is heteroatomic combination? In heteroatomic combination, there is a combination of different types of atoms. Different types of atoms combine to produce heteroatomic molecules. यहाँ पे different atoms combine होते हैं. Different atoms combine to produce heteroatomic molecule. Like we have, अगर हमारे पास कार्बन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एटम है या हाइड्रोजन एटम है, अगर कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे ये क्या बनाएंगे? CO2. इसी तरह जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे ये क्या बनाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज H2O. सो हियर इज a combination of different types of atoms, carbon, oxygen and hydrogen. अगर कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे ये क्या बनाएंगे? CH4, that is मीथेन. अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए, when many heteroatomic molecules combine, अगर जब heteroatomic molecules, बहुत सारे heteroatomic molecules कंबाइन करेंगे वो क्या बनाएंगे? They will form a compound. When many heteroatomic molecules combine, they form a compound. I will write this definition here. When many heteroatomic molecules combine, they form a compound. Like CO2. When many molecules of carbon dioxide combine, they form a compound of carbon dioxide gas. A compound of dioxide gas. This is a compound of carbon dioxide
Yes. Let us sum up this whole thing, what we discussed. Let us sum up. Let us take hydrogen H2, money H2, H2O, and a glass containing water. This hydrogen is an atom, and this H2 is homoatomic combination. Homoatomic combination. This is homoatomic combination or homoatomic molecule. Homoatomic combination of atoms. This is homoatomic molecule. And this H2, money H2, this combination of money H2 is hydrogen element. This is hydrogen element. This is homoatomic combination. This is a hydrogen molecule. This is hydrogen element, and this is heteroatomic molecule. This is heteroatomic molecule, and this glass of water is compound. Hope you have understood today's lecture. Inshallah, in the next lecture we will discuss about the mixtures and its types. Thank you.